for example, there are X number of people in a university, and for these people, we want to build an assistant, okay, which can ask simple questions like, ये थोड़ा बड़ा कर दो. How many holidays do I uh, get per year in idea? So, what do you think the AI should reply? A simple AI would reply. A RAG-based model would reply it as like 20 per year. Another example, like what is the policy on sick leave? Then it will retrieve from the database or the PDF which is being used, and it will reply that 10 number of people and 10 number of sick leaves are there. This is and it will also reply like doctor's appointments are needed for leave application for leave approvals. So these are available, these data are available in files such as PDF or any kind of database, okay, and we can, using this, we can build a RAG. Now what's a RAG? Anybody, do you know what's a RAG? Huh, I will be. So RAG is a RAG is retrieval, augment, generation. You will be build, this will be a retrieval augment generation chatbot which will be answering these questions. Okay, but question, is this agentic AI? Is this? No, it is not. Then now let's talk about agentic AI. There is a, not this, okay. Yes, so Anthropic has put forward a blog for building effective AI agents. What they define agentic AI as, they categorize an application into two parts. First of all, which is workflows and agents. Yeah, so therefore, where does RAG classify in? These are not agentic. RAG classifies inside workflows. Okay, so for example, another example, if you are, let's move on to a better model. Okay, for example, if you are an employee, okay, if you are an employee and ask how many how many leaves do I have left, it will say 7. Okay, and next we say apply for 2 days of leave on May 5 and May 6. So do you understand what this is doing? What it's doing that this is different from RAG. Here tasks are being automated. Apply for 2 days of leave on May 5th and May 6th. So here you have access to your this policy via PDF or database, but on top of that you have integrated several you have integrated LLM and HR management system. Okay, LLM with HR management system. Through the HR management systems API. Okay, so with this, what they'll be doing is that for applying for 2 days leave on May 5 and May 6, um, it will be in taking out the employee name, and you can also apply for a leave, and it will be automated. It will identify your identity, and then it will do the necessary steps which is required. The main question again, is this agentic AI? What do you think? Is this agentic AI? Yes, but no, it's not agentic AI. This is called as tool augmented. It is actually a tool augmented chatbot. Okay,
where you are using various tools or functions. Tools are basically functions. To simplify, we coders are like, we give fancy name to different things, but actually things are very simple. Tools are basically functions. Okay, in JavaScript, any kind of function are tool. It's tool augmented chatbot. So what actually is then agentic AI? Okay, now for example, in the chatbot, what is required? Okay, um, an agentic AI is actually something which needs multi-step reasoning, which does multi-step reasoning and multi-step planning. Okay, these are what agentic AI does. So, for example, that if you are planning to onboard, this is what I give to the LLM. Okay, onboard the new intern joining on Monday. So, the what the AI will be doing, it will be like forming different stages. Okay, it will be doing different stage of works. For example, like first of all, it will prepare the onboarding checklist. Next, it will it it will schedule a welcome meeting. Next, it will send access access request for the intern to the IT department. And then fourth, um, fourth, it will order welcome kit for the intern. Okay, so what is being used over it for onboarding checklist? uh, it will prepare the onboarding checklist with what are being used? Google Sheets, for example, you'll be checking in Google Sheets or any form of tool which is there available open source. For scheduling a meeting, it will use Meet, Zoom, or etc. जो any API. For sending request, it will have a custom API to which uh, department it will be going. Okay, there'll be many also in is for sending the request to IT department. The the department will be creating interns profile. Okay, and that will be integrated with a custom API. Next, ordering a welcome kit. It can create tickets. You can create tickets by like using Slack API, or something like that, or Discord API. You can there are many platforms wherein your companies meets are scheduled, like Slack, Discord. Usually people use Slack nowadays, so you can integrate Slack API and order welcome kits. Next, so what do you think? Is this agentic API? Is this agentic API? Tell me, शांत मत रहो. बोलो अमरीश, बोलो. हाँ, this is agentic API. Okay, this is agentic API. हम्म. किसका? हाँ. Okay. For example, here apply. Actually, I'll be coming to that. I'll be telling you because I'll be explaining it in form of diagrams. Okay, I'll be answering that question a bit later. That will be easier. हाँ, बोलो बोलो. तो ऑटोमेशन इज समथिंग जो पूरा वर्कफ्लो को लाइक मतलब विदाउट एनी
Actually, there is a difference. You are using in agentic AI, you are using various system, various agents, various models, various tools, and that forms a complete agentic AI system. Okay, but automation is just a way of automating things so that it doesn't stop. It doesn't need human intervention over there. For approvals, they need human intervention. Actually, it's a different topic. You can't compare. You can compare. Automation is actually a part of agentic AI, you may say. Automation होगा तभी agentic AI workflows like for example, yeah, रुको रुको, अरे भाई ये हटता कैसे भाई. For example, all of you may know what lovable is, right? I wrote a simple prompt over here yesterday night. By the way, event के लिए it's एक चीज हम बीच में बता देते हैं. For the particularly for the event, you don't need to like मतलब उधर कैसे इतना कम टाइम में इतना कुछ होगा. आराम से आओ. पहले से you can make and come. I want innovative solutions. अगर पूरा प्रोटोटाइप मतलब पूरा प्रोडक्ट ना बने, प्रोटोटाइप इज इनफ. प्रोटोटाइप इज इनफ. वर्कफ्लो इज इनफ लाइक आई शोड NN10 का वर्कफ्लो, राइट? So for example, this is the prompt I have given. For example, create a React project using Next.js and Tailwind CS to make a club website for Codex. What Lovable is? Lovable itself does all of this, which I have discussed above, like prior to this, that it is planning. Like it thought for 15 seconds, See what it has done. So many things. It has planned everything. It has coded everything. It has executed in different files. It has made different components. It will first figure out what to build and what features it should have. Okay, see, first version feature. Everything is planned and then properly executed, and this is the result. This is the result. This whole system of Lovable is actually an agentic AI system which works properly using different tools in the its backend. You yourself can make a Lovable, right? Like right now, in in various YouTube videos also they'll be teaching you how to make Lovable, because right now using AI and all the open source products, building something like this is very easy, which in like 2 years before it was very complex using just hard coded stuff. But now so many things have come and it's really easy. So what we expect from you is actually an agentic AI system. तुम लोग front end बनाना, back end बनाना, आराम से बनाना, and just a workflow will also do, a core workflow will also do, like I will be showing, or something like this. For example, you are making a traveling assistant. Okay, this is, I'm just showing a basic example. You will be making projects based on the problem statements or the SDGs you have chosen. For example, you have chosen a healthcare SDG. I have chosen a transportation or some transportation एक SDG में आता है. I'm not sure कौन सा वाला. So I am making a travel agent. Okay, assistant. Okay, so what it does, it plans my trip. Like for example, LLM, in the LLM I put plan my trip to, बोलो कोई जगह का नाम दो, कोई भी बोलो. लो पूरी, फ्लाइट से पूरी जाएगा इधर से, ठीक है. ओके ओके, ट्रेन से जाना. ओके, प्लान माई ट्रिप टू पूरी ऑन अंडर अंडर 10K. 10K बहुत बजट है, या 1K दे देते हैं. ओके, ठीक है, 1K दे देते हैं. So first of all, what your system would be doing is it will be searching for flights और ट्रेन्स. आजकल बहुत सारा एपीआईज हो गया है. फॉर एग्जांपल फ्लाइट का मेरे को पता है, एक्सपीडिया एपीआई करके है. ट्रेन्स का भी बहुत सारा एपीआईज हो गया है जहाँ से तुम डेटा कैप्चर कर सकते हो, ले सकते हो, उसका टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ ले सकते हो. देन यूजिंग दैट डेटा, what in this will all be happening in the backend. You will be comparing all the prices, different prices which will be shown.
what this is what I'm saying ki what your project can have. These are, you have to explain me the agentic AI features, okay? What your project is doing. It doesn't matter if it doesn't look beautiful or appetizing in to my eyes, but it should look like feature rich or something which like fulfills agentic AI criteria, not just a simple chatbot, okay? Okay, so maybe it checks hotels आजकल मेक माई ट्रिप का तो वो पेड एपीआई है, बट कुछ कुछ होटल्स का एपीआई फ्री आता है. बहुत लोग होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं उससे. एंड देन मे बी ऑप्टिमाइज आइटिनरी or maybe even book automatically. Just you you type book my flights to Puri and it will book. That's the system you have to design, okay? This will all be happening in the backend part. Okay, so now I'll be showing you one thing. For example, just a very simple code using a bit of prompt engineer. And prompt देखो देना पड़ता है. An agentic AI is actually a collective system of using models, using different tools and function. Okay, so here, for example, here we have used Agno. Agno, what is Agno? Okay, so Agno is actually it is a reasoning agent. Okay, it helps us. The regular models often rush to answer, and you can refer to the docs. Okay, what I have done over here is I have used Agno and imported agent. From the Agno itself, I have imported the Gemini model. I have used the model, okay, over here. I have used the 2.5 flashlight, and then in the env I have put the API key. Okay, I have used different tools such as Y finance tool. So what is a Y finance tool? Okay, see, आप देख रहे हो इधर enable stock price true, enable company info false. ये सब आप उधर जाके वो जो ब्रैकेट के अंदर देंगे तो ये सब ट्रू हो जाएगा. मतलब ट्रू फॉल्स आप करते रहेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो रिपोर्ट होगा वो जनरेट होगा विदाउट इवन गिविंग स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट लाइक दिस इंस्ट्रक्शन. ये एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है इन विच थिंग्स वुड बी डन. बट ये जैसे वाई फाइनेंस टूल्स हो गया, इसके अंदर लाइक ऑल देयर आर लॉट ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प देम टू क्रिएट अ रिपोर्ट और समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रन कर देते हैं ये. And I have given the instructions. I have told it to use Y Finance tools. I have given it the model with which it will run. What I want the agent's response is to write a detailed financial report on JP Morgan. Okay, so financial report. अब सिंस वाई फाइनेंस टूल्स हेल्प करता है वो फाइनेंशियल ये को करने में, अभी मैं इधर बस एनेबल स्टॉक प्राइस बुलियन ट्रू है, मतलब बस स्टॉक प्राइस को ये करेगा, कैच करेगा. ओके, देखना, इट विल टेक सम सेकंड्स आई गेस सो. So it is right now gathering the data. See, it called get current stock price. This is actually something. This is actually a method. Okay, this, like I said, tool calls. What are tools? Tools are basically functions. This is a function, get current stock price. किसका? JPM का. ठीक है. सो उससे हम लोग को क्या पता चला, टूल प्राइस देखना इधर आएगा, देखो करंट स्टॉक प्राइस. बाकी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, समरी दिया हुआ है, कंपनी ओवरव्यू वगैरह वगैरह, बट एग्जैक्ट थिंग व्हाट वी नीडेड वाज टूल प्राइस. ऐसे करके आप काफी कुछ जनरेट कर सकते हो यूजिंग. दिस इज आल्सो एन एआई एजेंट रीजनिंग मॉडल. ओके, रीजनिंग के लिए ये एजेंट यूज होता है. दिस इज एन एजेंट, it does many things at once. Okay, and uske andar there are different functions iske or tools via we can get lot of stuff. So this is one of the agents. Next I will talk about before I go to more tools, I want to explain actually I want to explain a bit more regarding agents. Okay, agents. So
एजेंट्स एजेंट्स के अंदर एलएलएम आता है, ओपन एआई, जेमिनाई. व्हाट आर दीज? ये है ब्रेन. ओके, दिस इज द ब्रेन ऑफ द एजेंट. ये इसके थ्रू यू आर गेटिंग डिस्क्रिप्शंस, यू आर गेटिंग माने एवरीथिंग, कंटेंट इज गेटिंग जनरेटेड यूजिंग दिस. अनदर स्टफ इनसाइड द एजेंट जो आता है वो है मेमोरी. मेमोरी मेमोरी का क्या यूज है हम बताते हैं. क्योंकि जैसे कि आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री चैट जीपीटी में देखते हो, वो लोग स्टोर करके रखता है. आप बोलोगे माय नेम इज प्रीतिश विश्वास और फिर कुछ एंटर करोगे, फिर 10 मिनट बाद आप पूछोगे तो वो प्रीवियस कन्वर्सेशन हिस्ट्री से आपका नाम निकाल देगा. वो मेमोरी, एजेंट्स के पास मेमोरी रहता है. बट द थिंग इज, agents, agents have very very limited memory. And in this times right now, what developers, आप nvidia बोलो, कोई भी ह्यूज ह्यूज कंपनीज बोलो, सब अभी ये फिगर आउट करने में है कि एजेंट्स का मेमोरी साइज कितना बढ़ा सके. क्यों बोल रही हैं? जैसे आप चैट जीपीटी को एक कन्वर्सेशन का चीज का करोगे, आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहोगे. अब मान लो 20-25 क्वेश्चन बाद आप अगर एक चीज जो पहली बार पूछे थे या दूसरी बार पूछे थे वो पूछोगे, तो वो हेलुसिनेट कर जाएगा. क्योंकि एजेंट उसका मेमोरी है, लेकिन एट दैट टाइम इट इज नॉट दैट लार्ज. वो हेलुसिनेट कर जाएगा, कुछ भी बोलता रहेगा, बिकॉज इट हैज गिवन सो मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स और सेम टॉपिक्स की वो नहीं आ पाएगा. ओके, सो अभी ये इशू है इसके साथ. बट लाइक द टाइम्स आर इवॉल्विंग, सो मे बी हु नोज आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टूल्स. ओके, like I said, tools is a very fancy word. Okay, like policy is a very fancy word, policy making is a very fancy word. But what is policy? Policy is making rules, it basically is rules and guidelines for the company. You have to defend your policy, you have to defend your rules and guidelines. uh, so like that. Okay, so what are tools, like I said, are basically फंक्शन. जैसे अभी जो गेट स्टॉक प्राइस के, वैसे ही लाइक फॉर एग्जाम्पल एक अलग एग्जांपल लेते हैं. क्रिएट अ नोशन पेज, क्रिएट नोशन पेज, ये एक फंक्शन हो गया. इसके अंदर हम लोग डेटा दे देंगे एंड कोई भी जावा स्क्रिप्ट बोलो, जावा बोलो, कुछ भी बोलो, ये एक नोशन पेज क्रिएट करने का फंक्शन है जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है. अब ये जो फंक्शन है ये मेमोरी में स्टोर्ड है. अब मान लो कि LLM, द ब्रेन इज कॉलिंग, फॉर द एजेंट एंड इट इज गेटिंग एक्सेस फ्रॉम द मेमोरी में ये है. बट तो ये उस टाइम क्रिएट नोशन पेज को फेच करेगा. अब मान लो फॉर एग्जाम्पल देर इज ऑलरेडी अ नोशन पेज क्रिएटेड. हम लोग LLM में दिए नॉट टू क्रिएट बट टू मेक चेंजेस इन द नोशन पेज. कोई पर्टिकुलर चेंजेस अगर हम नोशन पेज में करने बोले, सो तब तो फिर से क्रिएट नहीं करेंगे, ये फंक्शन को तो फिर से कॉल नहीं करेंगे. लेकिन ऑल दीज थिंग्स हम लोग ह्यूमनली नहीं कर रहे. all these things are done by LLM, the brain. What they are itself deciding that which function to call. उस टाइम फंक्शन कॉल हो गए एडिट नोशन पेज. ओके, और अगर ये फंक्शन नहीं रहा देन इट वोंट बी कॉल्ड. अगर आप स्पेसिफिकली ये फंक्शन मतलब अगर आप स्पेसिफिकली ये चीज मेमोरी में ऐड नहीं करते हो, then it will not be calling that. Okay, so ये basic चीज है for agents. What are specifically agents? tools होता है basically function. Okay, and एक वो जो how to मतलब जो brain और इसको कनेक्ट करता है टूल्स को, वो है NLP इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके हेल्प से कोई भी ये डेटा जो हम लोग कोड लिखेंगे वो NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके LLM उसका डिस्क्रिप्शन देगा, वो समझेगा क्या आउटपुट उसको चाहिए, एंड देन
ये वापस करके ये देगा. ओके, सो another thing is basically called as agentic workflow. ठीक है, अब मान लो user is giving a query, okay, then make a plan. This is a planning agent. We have set up a planning agent, then uh, execute with tools. ठीक है, and इधर देते हैं reflect on results. ठीक है, मान लो there's a what is agentic workflow basically. Agentic workflow is basically if, for example, a user gives a query in the LLM, what the LLM should usually do is first of all make a plan. जैसे हम लोग लवेबल में दिखाए थे, लवेबल प्लानिंग कर रहा है, कैसे करके रीजनिंग, क्या फीचर होगा उसका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. What it will do, it will then execute with tools. Lovable चाहता है to create a notion page, it will call the function notion page. ठीक है, लेकिन बाई चांस वो LLM नहीं समझा, लाइक ये जो चीज हो गया ना, ये एजेंट है. एंड वर्कफ्लो कैसे इधर आ रहा है समझना, कि मान लो वो चीज क्रिएट नोशन पेज है लेकिन वो नहीं समझा, या फॉर एग्जांपल मान लो एडिट करना है नोशन पेज को, एंड लेकिन वो जो आफ्टर मेकिंग अ प्लान ही इज प्लानिंग टू क्रिएट इट, एंड it is executing with tools, it is creating a notion page. But later on what is happening is while reflecting on results, again it will go to the LLM to decide if my जो result है वो सही है कि नहीं. It will ask their LLM, this is what they want. ये workflow है कि result एक आया लेकिन वो create हम लोग नहीं करना चाह रहे थे, हम लोग edit करना चाह रहे थे. तो यहाँ पे फिर से वो बोला no, this is if not okay. Okay, if not okay, if the results are not okay, अगर तब ये फिर से प्लानिंग करेगा. एंड दिस स्टेज, दिस होल थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग till you get a perfect results, and if it is okay it will give result on dashboard. Okay, so this is basically agentic workflow. अब हम सोच रहे हैं लाइक यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है, क्योंकि अभी तक एजेंटिक एआई सिस्टम्स आई वांट टू शो नाउ कि क्या हो रहा है. ओके, there are many low code tools as well, like ये तो ये हो गया. हाँ, Zapier. Basically this is what is Zapier. Okay, Zapier एक मतलब एक एक एपीआई, मतलब एपीआई नहीं होगा, एक कंपनी का नाम है जहाँ पे तुम लाइक यू कैन कनेक्ट एनी एआई. लाइक फॉर एग्जांपल इधर क्या कर रहा है, एक वीडियो देखना. what is it is doing, Zapier is getting connected using MCP. what is MCP, किसी को पता है MCP कोई यूज किया है कभी? MCP अमरेश, हाँ वो तो फुल फॉर्म तो पता है. इट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टूल्स, स्पेसिफिकली लाइक एआईज को जो ये कनेक्ट करता है. हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल ये, हाँ आईपीएल, हाँ पाइपलाइन, सीआईसीडी तो अलग हो गया, वो अलग बात है. लाइक एमसीपी, हाँ मतलब पाइपलाइन एज अ इंग्लिश टर्म, ठीक है. हाँ, सो यू कैन डिजाइन एन एमसीपी, एंड एमसीपी में ना तुम अगर एमसीपी कभी यूज करोगे बाद में, कभी जाके एक्सप्लोर करना, वहां पे यू कैन गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजनिंग जिसके थ्रू, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरी जिसके थ्रू एन एलएलएम विल आंसर इट. अब देखना, हम लोग एमसीपी में मान लो बहुत कुछ डेटा वेटा दे दिए, ठीक है. अब ये वीडियो देखना, व्हाट्स ऑन माई कैलेंडर. मेरा कैलेंडर में मतलब व्हाट्स ऑन मतलब मेरा
माई मेरा आगे का टू डू लिस्ट बेसिकली। मेरा टू डू लिस्ट में क्या है अभी, बेसिकली हम अगर डेटा दिए हैं कि मेरा टू डू लिस्ट में आई आई वांट टू गो समवेयर एट 6 PM, तो वो दिखाएगा यूजिंग द LLM। ओके, here ये agentic AI इसलिए because it is first of all calling the calendar, okay, it'll allow once, it will go and go to different tools, Google Calendar, find multiple uh, ये कौन है भाई, ओके, सो इट, देखो अब रेस्पॉन्स में एक जेसन आया, एंड देन यू गेट द प्रॉपर आउटपुट इन अ सिस्टमाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। ऐसा करके एक और क्वेश्चन करके वो लोग दिखाएगा, ठीक है। ये एक लो कोड टूल है, अभी तो ये फ्री नहीं है, बट देर आर मेनी टूल्स विच आर एक्चुअली सॉरी MCP is free, but Zapier is not free. You can use Zapier MCP for your various purpose, या फिर कोई बेसिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। मल्टी एजेंट मॉडल ये सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, ये ठीक है। नेक्स्ट क्या, आई वांटेड टू शो, क्यू AI हो गया, यू कैन डिजाइन मल्टीपल डिजाइनिंग एजेंट्स, ऑर्केस्ट्रेट क्रू एंड ऑल दैट। एक बीच में आया था केस्ट्रा में, एक बार हम भरे थे, दैट इज एन ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ओके। ये वर्कफ्लोज को प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेट करके पैटर्न्स बना के APIs वगैरह वगैरह सब यूज कर, मतलब प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेट करता है ताकि सब जगह चले, अच्छे से चले। तो यू कैन यूज दिस टूल्स, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स लाइक दिस। तो actually this is it, you can use OpenClaw, you can use QAI, you can use Kestra, you can use LangChain, there are a lot of tools, and उसके लिए बस you need maybe an hour of study, क्योंकि ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप बोलो कि अभी कुछ ये कर, हमको टाइम लगेगा, लेकिन लाइक थोड़ा टाइम बाद हम बना लेंगे, ऐसा ये है, क्योंकि हम भी उतना ये पढ़े नहीं थे लैंग्वेज, आई डोंट नो, but after reading it, it is very interesting actually. Another thing, actually there is not much left, but I want to tell you one thing, is एक final मल्टी एजेंट वाला वर्कफ्लो, मान लो तुम बस एक एजेंट नहीं यूज कर रहे, यू आर यूजिंग मल्टी एजेंट वर्कफ्लो, ओके। मल्टी एजेंट वर्कफ्लो में क्या रहेगा, अगेन यूजर इनपुट रहेगा, एजेंट वन रहे, मतलब यू आर यूजिंग, जैसे हम बताए उधर N10 में, यू आर यूजिंग डिफरेंट एजेंट्स, there will be a classifier or a supervisor, सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर या जो एजेंट सिलेक्शन होगा वो सुपरवाइजर का काम होगा, ठीक है। एंड क्लासीफायर व्हाट इट विल डू, इट विल क्लासीफाई डिफरेंट एजेंट्स फॉर डिफरेंट टास्क, ठीक है, एंड देन रेस्पॉन्स देगा फाइनली, ओके। सो दिस इज मल्टी एजेंट वर्कफ्लो। अनदर थिंग, एक मेन टॉपिक है कि जनरेटिव AI एंड बेसिक चीज है कि जनरेटिव AI एंड एजेंटिक AI में डिफरेंस क्या है। जनरेटिव AI से अगर आप उसका वर्ड देखो, जनरेटिव AI, जनरेटिव मतलब कंटेंट जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, ये सब करता है। एंड एजेंटिक AI का बेसिकली ये है डिसीजन मेकिंग यूजिंग टूल्स और फंक्शंस, बस। एंड वैसे करके you can execute a proper workflow, and then you can make different systems. To summarize it, I would also like to say, to summarize it, you can use, like I said, OpenClaw, OpenClaw हो गया, QAI हो गया, Kestra हो गया, N10 हो गया, N10 workflows you can create, ठीक है। इधर कुछ कुछ देख लेना, ये वाला वेबसाइट जो एंथ्रोपिक वाला है, इट विल हेल्प यू अ लॉट।
because basic understanding of LLM router and then LLM call 2 3 इधर एक राउटिंग जैसा हम आपको बताए वो मल्टी एजेंटिक है सुपरवाइजर जो रहता है वो LLMs को कॉल करता है देन एक एग्रीगेटर मतलब तीन LLM आर फॉर एग्जांपल वन इज प्लानिंग वन इज maybe a sales team one is for some other team and then in the end they want to reach to a concluding step that is a summary that is the aggregator ठीक है यहाँ पे वेक्टर्स एंड ऑल दैट काम आता है देन ऑर्केस्ट्रेटर अगेन ऑर्केस्ट्रेटर काम होता है डिवाइडिंग स्टफ इन टू डिफरेंट एलएलएम बेसिकली आप आपका एक सेट एक प्लान है वो एलएलएम को जाएगा एक एलएलएम को जाएगा टू फॉर सेल्स एक को जाएगा एचआर के लिए एक को जाएगा कुछ अलग पर्पस के लिए एंड देन इट विल सिंथेसाइज आफ्टर whatever your the product you are making okay this is basically agentic AI and हाँ ये important है कि there is a loop of action and feedback always LLM मतलब जो agentic AI का मेन डिफरेंस यही है कि वो LLM कॉल बार बार करेगा till you get a perfect result फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया एंटी ग्रेविटी हो गया आप कुछ भी दे रहे हो मतलब कुछ भी लिख दे रहे हो एंड इट विल परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लानिंग ओके एंड ऐसे करके यू विल बी एग्जीक्यूटिंग अ प्रॉपर वर्क फ्लो एंड एन एजेंटिक सिस्टम ओके so that's all actually from my end if you have any doubts you can ask please raise your hands if you have any doubts हाँ बोलो नहीं एक्चुअली ना the problem statement it is up to you okay but you have to follow the UN SDGs that you are selecting like you have to make it on a particular SDG जो आपको एक abstract दिया रहेगा उसमें आपको properly बताना है कि कौन सा SDG आप के अंडर आपका प्रोडक्ट आ रहा है या प्रोटोटाइप आ रहा है एंड देन उसके हिसाब से that will be your problem statement okay it is open innovation okay ठीक है आप अपने से बता सकते हैं बस आपका वो यूएन एसडीजीज को रेफर कर दीजिएगा बस उस बस जो अंश भी बताया था शुरू में कोई और डाउट पॉलिसी मेकिंग अभी आएगा ठीक है और इसके रिलेटेड हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है एसडीजीज एक्सरसाइज अगर आप हेजिटेट अगर आपको ये बनाना सी आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्चुअली वेरी इजी स्टफ देखो ना हम कहीं से एजेंट को ले लिए एग्नो से एजेंट्स लिए हैं आई हैव यूज डिफरेंट मॉडल ये कोड स्टफ है ठीक है वो जो हम मल्टी एजेंट सिस्टम बनाए उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोड्स फंक्शंस रहेंगे ठीक है ये दिस इज अ फंक्शन is a whole function and then what it's doing it's giving us a response कि एक report generation करना है and see over here a tool is getting called which is itself a function so it's a very easy concept fancy terms के साथ तो वही है and I would like to add to that कि अगर मान लो तुम आप फ्रंट एंड बैक एंड सिस्टम्स बना रहे हो बैक एंड का वो तो रहेगा एपीआई कॉल सब कुछ ये सब पूरा बैक एंड सिस्टम्स में ही रहेगा फ्रंट एंड अट्रैक्टिव ना हो भी तो चलेगा कोई इशू नहीं है या उधर तो वाइब कोडिंग कर सकते हो इट्स नो इशू वाइब कोडिंग कर सकते हो बिकॉज टाइम रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे एंड बस एक प्रॉपर एजेंटिक सिस्टम रहना चाहिए अगर even if you are using a single agenting system it doesn't matter if you even if you are using a single agent which does 2 3 things like I said travel assistant हो जैसे होता है planning करता है बुक टिकट्स बुक करता है या कुछ भी वैसे करके ठीक है और कोई डाउट है नहीं है ओके एक सेकेंड रुकना हम एक जगह नोट करके रखे थे what all you can actually make I wanted to give you certain projects as an example okay to make it easier for you like I said एक तो traveling agent हो गया लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन कोई एसडीजी होगा उसमें उसके अंडर फॉल करेगा लेकिन अपने एसडीजीज के अंडर आप प्रोडक्ट बनाना
you can make a multi-agent research assistant actually. You know, you can use there can be different agents. For example, एक planner हो गया, एक planner हो गया, एक एक planner agent हो गया, एक researcher हो गया जो fetch कर रहा है info. ये ये call कर रहा है, what is it is doing, it is calling get info. ठीक है, ऐसे करके. एंड देन एक राइटर एजेंट हो गया, प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट देगा, प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट देगा. फॉर दिस यू कैन यूज जैसे वेब सर्च एपीआई यूज कर सकते हो. ओके, क्या क्या. और और बेसिकली जो हम टूल्स जैसे बोले, N10 हो गया, क्रू एआई हो गया, यू कैन यूज ऑल ऑफ दोज थिंग्स. लैंगचेन, लैंगचेन से भी ये हो जाएगा. एंड देन अगेन मॉडल्स सच एज जेमिनाई का फ्री, जेमिनाई तो फ्री होता है. क्लॉड का भी आया है उसका, लेकिन थोड़ा लिमिटेशंस है, मतलब उतना नहीं कर पाओगे उधर अगर क्रेडिट्स चला गया तो ये है. ऑल दीज एपीआई मॉडल्स यू कैन, मतलब एपीआई का उस की लेके यू कैन डू दैट. सेकेंड आइडिया, दिस इज फर्स्ट आइडिया. सेकेंड आइडिया, कोई भी फाइनेंशियल कुछ करोगे जैसे लाइक अ स्टॉक स्टॉक एडवाइजर हो गया. ठीक है, स्टॉक एडवाइजर एजेंट क्या करता है? ठीक है, यू आर मेकिंग डिफरेंट एजेंट्स विद इट और अ सिंगल एजेंट जो फेच करेगा डेटा को, फेच करेगा, प्रॉपर फंक्शंस एंड टूल्स यूज करके करेगा, फेच, स्टोर डेटा. नेक्स्ट, it will analyze the different trends which are going on right now. It will explain decisions, it will take decisions, explain decisions. एंड देन वो वर्कफ्लो लाइक आई हैड एक्सप्लेन, जो एक प्रॉपर एजेंटिक वर्कफ्लो रहता है कि बार बार वो प्रॉम्प्ट करता, मतलब वो एलएलएम को देता है एंड द वर्कफ्लो कंटिन्यूज टिल इट गेट्स अ परफेक्ट आंसर. तो दैट्स द एजेंट. एंड ये जो आई लाइक आई शोड यू, उसमें वाई फाइनेंस टूल का यूज किए थे हम उसके लिए. एंड अगेन इसमें लैंगचेन भी आ सकता है, लैंगचेन काफ़ी जगह पे यूज होता है इसी सब के लिए. ओके, ट्रैवल एजेंट तो हम बताए थे. हाँ, एक और चीज़ है, जैसे लर्बल हो गया. ओके, फॉर एग्जांपल लर्बल, व्हाट इज लर्बल? लर्बल इज बेसिकली अ कोडिंग असिस्टेंट. यू कैन इवन मेक अ कोडिंग असिस्टेंट. ओके, कोडिंग असिस्टेंट एजेंट क्या क्या करेगा? पहले पहले इट विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जैसे बोले थे प्लान करेगा, राइट कोड करेगा, फीचर का सिलेक्शन करेगा, वो सब करेगा. वो सब कैसे करेगा? यू कैन मेक अ डिफरेंट एजेंट्स लाइक प्रॉब्लम एनालाइजर हो गया, जिसमें जो प्रॉब्लम एनालाइज करेगा उसका. एक कोड जनरेटर वाला कोई भी मॉडल यूज करके, प्रॉपर मॉडल जो कोड जनरेशन के लिए स्पेसिफिक मतलब अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं. क्लॉड कोड जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, इट गिव्स वेरी गुड आउटपुट. एक डीबगर भी रहेगा एजेंट, जो ये फाइंड करेगा कोई एरर है या नहीं. ये सब हमेशा याद रखना, ये सब एक कोई फंक्शन कॉल करता है, लाइक एन एरर फंक्शन, जनरेट कोड फंक्शन, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. इसमें यू कैन यूज ऑटोजेन हो गया, ऑटोजेन हो गया, ऑटो जीपीटी हो गया. ऑटो जीपीटी इज ऑल्सो अभी पेड आई गेस. और ये ऑटोजेन तो माइक्रोसॉफ्ट का है, सो दिस इज फ्री. और क्या होता है, देयर आर वेरियस लाइब्रेरीज आल्सो इन पाइथन जिसके जिसको यूज कर सकते हो. और स्टफ लाइक देयर, एंटी ग्रेविटी. हाँ हाँ, वो तो अलग हो गया. और रेप्लिट हो गया, देयर लॉट ऑफ. हाँ, वो सब तो ये हो गया. तो दीज आर ऑल बेसिकली, हम ये बताना चाह रहे थे कि ये सब एजेंटिक एआई है, ये सब एजेंटिक एआई सिस्टम से बहुत मल्टीपल एजेंट्स यूज करके ये सबको बनाया गया है. ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड बिहाइंड दिस,
बट इन द एंड यू कैन मेक दिस इन अ वेरी सिंपल वर्जन, जो कि इतना एडवांस नहीं रहेगा अभी जो कंपनी जो प्रॉपर कंपनी एस्टैब्लिश कंपनी प्रमोट करे, लेकिन एक आइडिया रहेगा। एक देखो इन योर प्रोजेक्ट्स एक आइडिया रहना चाहिए, एक स्केलेबिलिटी, एक फिजिबिलिटी वाला आइडिया रहना चाहिए। ये सब हाउ प्रोजेक्ट विल बी जज्ड, it will be judged on feasibility, it will be judged on scalability, it will be judged on what technical implementation so रहेगा, uh, understanding of the problem, there are a lot of things involved in it, okay. एक और पॉपुलर चीज जैसे आई हैड मेड समथिंग रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, तो वैसे करके और भी है डिजास्टर रेस्पॉन्स, इमरजेंसी का कुछ भी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एजेंट मैंने ऑल यू व्हाट यू कैन डू इज दैट फॉर एग्जांपल एलएलएम एक सिस्टम बनाना है, हेल्प हेल्प वर्ड ट्रिगर, इट इज वेरी क्रूशियल, और यू कैन यूज सेंसिटिव वर्ड्स जो कि हेल्प आई एम बीइंग अटैक्ड। हाँ, तो वो क्या हो गया, व्हाट इट विल डू, द एलएलएम नियर itself will call the nearest help center, okay, it will inform their, it will alert authorities like I said, and it will also suggest actions to the doer, the people, okay. So all of these things can be done using agents. आजकल बहुत एक और चीज चला है, बहुत लोग इसका बना रहे हैं, दैट इज अ रेज्यूमे, रेज्यूमे एनालाइजर और एडवाइजर, ऐसे करके चीजें भी बना रहे हैं। तो ये कोई प्रॉपर एसडीजी के अंदर आई डोंट नो रहेगा या नहीं, बट ऐसे करके प्रोजेक्ट्स एजेंट्स के वाया हो जाएगा, जो एनालाइज करेगा, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगा, एंड मे बी इवन recommend jobs, particularly वेब सर्च और स्क्रैपिंग यूज करके आप जॉब्स recommend कर सकते हो। लिंक्डइन तो आजकल इजीली स्क्रैप हो जा रहा है पूरा जॉब recommendations के लिए। वैसे करके एक हाँ, एक और चीज वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ अभी मेरे माइंड में आया, लाइक एन एआई डिबेट और काइंड ऑफ पॉलिसी सिमुलेशन, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो उसमें क्या होगा, your different agents will be named as government, citizens, or tech experts, and it will be debating, right? ऐसे करके कुछ भी आइडियाज लाइक अनशर्न आइडियाज भी यूज कर सकते हो, बेस्ट मतलब ठीक रहना चाहिए, मतलब बेस्ड ऑन द यूएनएसडीजीज रहना चाहिए। ये कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं रहा है, बट आई एम जस्ट गिविंग कि ऐसे करके एजेंट्स होते हैं, बना सकते हैं for your personal information. So that's all from my end. To end again, tools like blank आप फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, N10 से यूज कर सकते हो आप। सिंपल मॉडल कोई भी मॉडल यूज करो, जेमिनाई, ओपन एआई का तो अभी पेड कर दिया है एपीआई सब, एंड फिर क्लॉड यूज करो या ग्रॉक यूज करो, उसका मॉडल यूज करो, नहीं तो हगिंग फेस में इतना ये वाला हगिंग फेस में तुमको इतना सारा मॉडल्स मिल जाएगा, okay, use that, there are so many models, okay. So use those models, and then you make a proper agent which works in such a way that it fulfills the problem which is being discussed. That's all from my end. कोई क्वेश्चन रहेगा बोलो, ये तो we are continuing for the policy.